Assalamu alaikum. Walaikum salam. Okay, so welcome to the class of signals and systems, and today is our lecture number 6. Okay, so in our previous lecture, we introduced the concept of unit impulse response and unit step response for a class of systems which are known as LTI systems. And we found that LTI systems are completely characterized by their unit impulse response. And once we know the unit impulse response of a system, we can easily find out about the other behavior of the system, whether system is with or without memory, whether system is causal or non-causal, or whether system is stable or not stable. Today, we are going to talk about another representation of system in terms of equations. So let's talk about this concept. So now we are going to find out that LTI systems which are described by a particular type of equations known as linear constant coefficient. And if system is continuous, so they will be represented by differential equations. And if system is discrete time, then it will be represented by difference equation. Linear constant coefficient differential equations or linear constant coefficient difference equations. And I will be using this shorthand representation, abbreviated form linear constant coefficient differential or difference equation, LCCDE. So there are a number of systems in that belong to category of LTI system, and they are represented in terms of a system, in terms of equation, differential equation or difference equation. But you can see that there are two other things. They are described by linear and constant coefficient. So just to give you an example, if this is an equation, let's say dy by dt plus 2 times y of t equal to x of t. So this is an example of linear constant coefficient differential equation. So this equation is linear constant coefficient differential equation. Okay. So constant coefficient, you can see why this equation is called constant coefficient, because if you look at the first term, the constant coefficient is 1. If you look at the second term, you have 2. This is also constant. If you look at this term, this also has a constant coefficient equal to 1. So this is constant coefficient differential equation, and also it's linear constant coefficient because we don't have any higher power. We don't have something like 2y square t or x square t or derivative of y of t whole square or whole cube. So this is a linear type of differential equation. Okay. So this equation is representing some kind of a system. Is representing some kind of a system. So let's say this is LTI system whose input is x of t and output is y of t. So how output and input are related? They are related by an equation like this. Now we are interested in further finding out
what is the exact relationship of output in terms of input? This type of representation, another thing that I need to mention is whenever you have a system whose input and output are represented by an equation like this representation is known as implicit representation. This representation is known as implicit representation. What we are usually interested is, we are more interested in finding out what is known as explicit representation. And whenever I use the term of explicit representation, it means the output is represented in terms of input. Whenever output of a system is represented in terms of input, then that representation is explicit. So if you may have a system, so let's say you have a system where y of t is equal to some representation, some equation which involve input. Whenever you have such kind of representation where output is represented in terms of input, so this type of representation is known as explicit representation of a system. Now, how to convert this type of implicit representation to this type of explicit representation? We need to find out the solution of this equation. What we need to do, if system is represented by an equation like this, so in order to get the explicit representation, we need to find the solution of this equation. Okay. But there is some more information that we need to have, then we will be able to find out a unique solution. So what I'm saying is, to get explicit representation of a system represented by linear constant coefficient differential equation, we must solve it. However, we need more information than that provided by the differential equation. Can anyone comment on that? Not from signal and system perspective. You people have already taken a course of differential equations in your previous semesters. So whenever you solve any differential equation, what extra information is required? So what is this more information? Initial condition. Yes, initial conditions, yes. So from mathematical point of view, this more information is what you call initial condition in mathematical language. But in our case, this equation is not just a mathematical equation.
this equation is actually representation of this LTI system. And in this equation, this x of t is the input of our system, and y of t that you see in this equation is the output of our system. So this equation is now not just a hypothetical, theoretical, mathematical equation. This equation is now related to some physical system. So this more information that one of the students correctly pointed out, when you solve a differential equation, in order to find out a unique solution, you need something called initial condition. Once that information is provided to you, then you will be able to find out a unique solution. Now, from signal and system perspective, this more information, we usually call it auxiliary conditions. So which term we will use for this information? So other than this equation that will be given to you, we will also require information about auxiliary conditions. And just like in mathematics, अगर आप equation को solve कर रहे हैं और आपको initial condition change हो जाए तो equation का solution भी change हो जाएगा. So in a similar manner, if auxiliary condition, if you use a different set of auxiliary conditions, तो आपका solution भी change होता जाएगा. For every different selection of auxiliary condition, you will get a different solution. Now, हम कौन से auxiliary condition use करेंगे? ठीक है, हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये चीज तो मैं कंफर्म है कि सिस्टम जो है LTI है, it is linear time invariant. Other than that, auxiliary condition को फिक्स करने के लिए हम फोकस कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो causal LTI. So now I'm saying for causal LTI systems, we use auxiliary condition known as condition of initial rest. Condition of initial rest. Now, what is the meaning of this auxiliary condition? Condition of initial rest का क्या मतलब हो? Condition of initial rest का मतलब ये होगा कि as long as input of the system is zero. So let me write this. Condition of initial rest को मैं describe कर रहा हूँ कि अगर if input, जिसको हम x of t कह रहे हैं, अगर input हमारा zero है for some time less than equal to t naught. So there is some time जिसको मैं t naught कह रहा हूँ, जब तक टाइम इससे इक्वल है या इससे कम है, हमारे सिस्टम का इनपुट जीरो है, तो अगर ये सिस्टम कंडीशन ऑफ इनिशियल रेस्ट को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि आउटपुट ऑफ द सिस्टम will also be equal to 0 for t less than equal to t naught. So जो condition of initial rest का जो मैं आपको कह रहा था, इसका मतलब, and this is the auxiliary condition जो हम अपने सिस्टम के लिए यूज करेंगे. So what is the main point जो यहाँ पे हमने किया है कि LTI system which are represented by an equation like this as an example, इन सिस्टम को completely characterize करने के लिए हमें ये equation भी given होनी चाहिए और साथ में हमें क्या given होना चाहिए, auxiliary condition given होनी चाहिए. Now for every different auxiliary condition हमारे पास सिस्टम का जो behavior है वो change होगा. तो हमने अपने आप को
स्पेसिफाई कर लिया है कि हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो LTI के साथ साथ कॉजल सिस्टम भी। जब वो कॉजल LTI सिस्टम बन गया तो फिर उसके लिए हम एक पर्टिकुलर ऑक्सिलरी कंडीशन यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ इनिशियल रेस्ट। और कंडीशन ऑफ इनिशियल रेस्ट का मैथमेटिकली क्या मतलब है, वो ये मतलब। नाउ लेट्स इसको हम एक मैथमेटिकली इसको हम देख भी लेते हैं कि अगर आपको एक इक्वेशन दी जाए इस तरह की, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे किया था कि हमें इसको सॉल्व करना, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे और इस सोल्यूशन को हम जनरलाइज कैसे करेंगे। इस वक्त तो मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन इस स्पेसिफिक एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद हम इस प्रोसीजर को जनरलाइज कर देंगे ताकि आपको इवन अगर इस इक्वेशन के अलावा भी कोई और इक्वेशन हो लेकिन वो लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसके लिए फिर आप ये प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। तो एग्जांपल हमारे पास है कि जो सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये आपके पास कॉजल LTI सिस्टम है। इसका इनपुट x ऑफ t है, आउटपुट y ऑफ t है। और इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप है वो हमें गिवन है बाय इक्वेशन लाइक दिस, जिसको हम लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम दे रहे हैं। और साथ में हमें गिवन है कि इनपुट जो है x ऑफ t हमें गिवन है, इट इज इक्वल टू k e टू पावर 3t u ऑफ t। तो हमें क्या फाइंड करना है कि x सिस्टम का इनपुट अगर ये है, आउटपुट ऑफ द सिस्टम क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इम्पॉर्टेंट जो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, इसको हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। हम कहेंगे कि इसका जो भी सोल्यूशन होगा y ऑफ t इक्वल टू समथिंग। रिमेंबर इस रिप्रेजेंटेशन को हमने क्या नाम दिया था, एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर देंगे, फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जिसमें क्या होगा, y ऑफ t होगा, लेफ्ट साइड पे y ऑफ t होगा और राइट साइड पे हमारे पास कोई इक्वेशन होगी। ठीक है, सो इन अ सिमिलर मैनर इस आई एम सेइंग इसका सोल्यूशन जो होगा, इस सोल्यूशन के दो पार्ट्स होंगे। एक को मैं y सब p कह देता हूँ और इस सोल्यूशन का एक दूसरा कंपोनेंट होगा या पार्ट होगा जिसको हम y ऑफ सब h ऑफ p कहते हैं। नाउ व्हाट इज y of p and what is y of h? y of p को हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन और y of सब h को हम कहते हैं होमोजेनियस सोल्यूशन। So any given differential equation like this, we can represent the complete solution as if it is addition of two solutions. One is particular solution and other is homogeneous solution. अब ये जो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं, लेट्स कॉल इट इक्वेशन A. Particular solution will satisfy equation A, but homogeneous solution will satisfy an equation जिसको मैं homogeneous equation कहूंगा. So let me write the statement. Particular solution will satisfy equation A
whereas homogeneous solution will satisfy homogeneous differential equation. और इस homogeneous differential equation का क्या मतलब है? ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, इसमें अगर आप इनपुट को 0 कर लें, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जहां पे इनपुट है इसको अगर आप 0 कर लें तो इस इक्वेशन की जो फॉर्म बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? डेरिवेटिव ऑफ y of t प्लस 2y of t इक्वल टू 0. So which equation is called as homogeneous differential equation? This one. What I have done is कि मैंने right hand side को 0 कर लिया. So now you know कि जो particular solution है वो इस equation A को satisfy करेगा, complete equation. और जो homogeneous solution है उसमें हम input को 0 कर लेंगे तो ये equation बन जाएगी. तो हमारा जो homogeneous solution है वो इस equation को satisfy करेगा. ये जो homogeneous solution है इसको हम एक और नाम भी देते हैं. इसको हम natural response भी कहते हैं. Natural response. और जो particular solution है इसको from signal and system perspective इसको हम कहते हैं forced response. Because ultimately जो y of t है वो it is the output or response of our system. Output or response. तो complete solution को जो हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है तो इस y sub p को हम कहेंगे कि ये हमारे सिस्टम का forced response है. और जो y of sub h है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे सिस्टम का natural response. And it also जो टर्मिनोलॉजी है it makes sense. Forced response का मतलब ये है कि आपने x of t जो है आपका इनपुट है उसको आपने 0 नहीं लिया बल्कि आपने कुछ इनपुट अप्लाई किया. You force something to the system और as a result system ने आपको कुछ ना कुछ आउटपुट दिया. और जब homogeneous या natural response को अगर आप देखें आपने इनपुट को 0 किया हुआ है. There is no input to the system but system due to its inherent behavior it may be giving you something at the output. तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये हमारे सिस्टम का natural response. Now let's find out कि ये y of p और y of h आप कैसे फाइंड करें. We assume कि अगर हमारे सिस्टम का इनपुट जो है वो इस तरह का एक सिग्नल है जो कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल है. इनपुट पे हम एक्सपोनेंशियल सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं. सो वी कैन अज्यूम कि अगर सिस्टम पे इनपुट एक्सपोनेंशियल टाइप का है तो आउटपुट का जो बिहेवियर है वो भी एक्सपोनेंशियल होना चाहिए. तो हम कह देते हैं कि लेट y of p t is equal to some constant और इस constant को मैं y कह देता हूँ and then e raised to power 3. is the particular solution of equation A. और एक और चीज भी आप देख लें कि जो इनपुट मैंने अज्यूम किया है इसके साथ आपको नजर आ रहा है कि u of t है. u of t का मतलब क्या होगा कि हमारे सिस्टम का जो इनपुट हमने अप्लाई किया है वो t ग्रेटर देन 0 के बाद स्टार्ट हुआ है और t लेस देन 0 हमारे सिस्टम का इनपुट 0 है. x of t जो है 0 है तो आउटपुट भी 0 है.
तो ये जो हम लिख रहे हैं ये फॉर t ग्रेटर देन 0 लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर t ग्रेटर देन। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि हमने जो अज्यूम किया है कि ये सोल्यूशन है, तो अगर ये सोल्यूशन है तो इसको क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ए, और इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, दिस वन। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ यहाँ पे, और x की जगह ये पुट कर लेता हूँ। लेट्स सी व्हाट वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन ए। सो इक्वेशन ए विल बी इक्वल टू, सो हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। सो डेरिवेटिव जब लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स y is to power 3 plus 2 times this thing equal to x of t। ठीक है, व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने यहाँ सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने y of p सब्स्टिट्यूट कर लिया, और पहले स्टेप में इसका डेरिवेटिव लिया है, तो यू गेट दिस, derivative of this will be equal to 3 times y। Now you can simplify this, so this will cancel out, you get 5y equal to k, so y is equal to k by 5। so ये जो हमारे पास अननोन कांस्टेंट था जिसको मैंने y कहा था, now we know okay, that y must be equal to k times 5। so as a result particular solution हमारे पास क्या आ गया, particular solution is equal to k by 5 e raised to power 3t, and this is for t greater than 0। this is the particular solution। so हमने ये फाइंड कर लिया। now we need to find out what is going to be the homogeneous solution or natural response of the system। और जिस तरह मैंने कहा था कि homogeneous solution किस चीज का solution है, it is the solution of this equation। so let's find out, let's assume कि हमारे पास जो homogeneous solution है it is equal to some constant and e raised to power st। we don't know कि हमारे सिस्टम का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो क्या है, e raised to power t है, e raised to power 2t है, e raised to power 2.5t है, e raised to power minus t है, इसको मैंने s कहा। let this is the solution। it is, and then check it out कि ये solution अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या सेटिस्फाई होगा, इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा a s e raised to power st plus 2 times a e raised to power st equal to 0। so what I have done is कि मैंने ये solution substitute कर दिया इस equation में, and I get this thing। let me take a e raised to power st as common, so we get s plus 2 equal to 0। so from this equation we can see कि हमारे पास, sorry, this is, in order to satisfy this equation it's obvious that s must be equal to minus 2। okay, so इससे हम क्या conclude कर लेंगे कि s must be equal to minus 2। so now we know that this s must be equal to minus 2। हमारे पास homogeneous solution क्या आ गया, y of h of t is equal to constant a e raised to power minus 2t। so now what is the complete solution? complete solution जिसको हम y of t कह रहे थे, और we assume कि it is
sum of 2. So it was y of p of t plus y of h of t. Y of p of t हमने find कर लिया था, it was k by 5 e raised to power 3t. ये हमने find कर लिया a e raised to power minus 2t. And this is the solution for time interval t greater than 0. Now, coming to this question जो हमने यहाँ पे raise किया था. Yes. हमने एक statement दी थी कि to get explicit representation of a system which is represented by linear constant coefficient differential equation, we must solve it. तो हमने solve तो कर लिया और solution हमारे पास ये आ गया. ये solution हमारे पास आ गया. But you can clearly see that this solution can have infinite possibilities because of this constant. इस constant की value अगर हम change करते जाएंगे तो हर different value of a के लिए हमारे पास different solution आएगा. इसको हमने unique बनाने के लिए क्या कहा था? However, we need more information than that provided by differential equation. और यहाँ पे मैं add कर लेता हूँ. Why we need more information? To get a unique solution. In order to get one unique solution, हमें auxiliary conditions known होनी चाहिए. ठीक है? और auxiliary conditions कौन सी वाली हम apply करेंगे? हमारा system causal LTI है, तो condition of initial rest हम apply करेंगे कि अगर x of t 0 है for some particular time interval t naught, तो y of t भी 0 होगा. इस केस में अगर आप देखें हमारा इनपुट जो है वो 0 है for t less than 0. इसका मतलब है कि आउटपुट भी 0 होगा for t less than 0. So we can make use of this condition. So now, what is the auxiliary condition that we will use? X of t is 0 for t less than equal to 0. It means y of t will also be 0 for t less than equal to 0. So let's find out कि इस equation को at t equal to 0 हम इसको evaluate करते हैं. So at t equal to 0, this must be equal to 0. So at t equal to 0, y of t must be equal to 0, which means 0 k by 5. T को 0 put करेंगे, this will give you 1. This will also give you 1. So k plus 5 divided plus skip a, which means a must be equal to minus k by 5. So out of infinite possibilities for this unknown constant, when we apply this condition, which is valid for causal LTI systems, हमारे पास इस a की एक यूनिक वैल्यू आ गई जो कि ये है. इसका मतलब है कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन क्या आ जाएगा? y of t equal to k by 5 e raised to power 3t minus k by 5 e raised to power minus 2t. And then इसको हम simplify कर लेते हैं. K divided by 5 can be taken as common, and within the parenthesis we get e raised to power 3t minus e power minus 2t. And complete solution का मतलब है कि इसको हम u of t के साथ लिख लेते हैं. This is for this condition. For t greater than 0 का मतलब ये है कि is u of t. So this is the unique solution that we were looking for. Now,
important point that you need to understand is कि इस एग्जांपल में इस पर्टिकुलर केस में हमने एक पर्टिकुलर सिस्टम को सॉल्व किया जिसको हमने इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया, बट यू कैन सी कि ये कौन सी इक्वेशन है. दिस इक्वेशन इज a special type of differential equation known as linear constant coefficient differential equation. So whenever you have a system which is represented by this category of differential equation, इस सिस्टम का सोल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्लीट सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है एज सम ऑफ टू पार्ट्स पर्टिकुलर होमोजेनियस. पर्टिकुलर सोल्यूशन का ताल्लुक या पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है क्या होगा वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द इनपुट टू द सिस्टम. तो इस इनपुट के हिसाब से हमने y ऑफ p फाइंड किया, और जो सेकंड पार्ट है जिसको हमने होमोजेनियस सोल्यूशन या नेचुरल रिस्पांस सोल्यूशन का नाम दिया, उसमें हमें क्या करना होगा? इनपुट को 0 करना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग इक्वेशन रह जाएगी इसको फिर हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें राइट साइड पे 0 होगा. इसका जो भी सोल्यूशन होगा उसको फिर हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस सोल्यूशन कहते हैं. और होमोजेनियस सोल्यूशन में आपके पास एक अननोन कांस्टेंट हमेशा होगा. तो जब कंप्लीट सोल्यूशन आप लिखेंगे तो सोल्यूशन में आपके पास ये कांस्टेंट आ जाएगा. अब ये जो सोल्यूशन है ये अब आपके पास कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है. इन ऑर्डर टू गेट टू अ यूनिक सोल्यूशन, वन यूनिक सोल्यूशन, हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? ऑक्सिलरी कंडीशंस होनी चाहिए. एंड फॉर एवरी डिफरेंट ऑक्सिलरी कंडीशन हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी एंड ऑटोमेटिकली आउटपुट डिफरेंट होगा. लेकिन हमारा जो फोकस है इस पर्टिकुलर कोर्स में वो कौन से सिस्टम्स के ऊपर है? जो कि कॉजल एलटीआई सिस्टम्स है. सो कॉजल एलटीआई सिस्टम के लिए जो ऑक्सिलरी कंडीशन हमें अप्लाई करते हैं वो ये होती है, और इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया हुआ है? कंडीशन ऑफ इनिशियल रेस्ट. So causal LTI सिस्टम के लिए हमेशा कौन सी ऑक्सिलरी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं? कंडीशन ऑफ इनिशियल रेस्ट. वंस यू अप्लाई दैट पर्टिकुलर ऑक्सिलरी कंडीशन टू दिस सॉल्यूशन, आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि ये है. अब ये जो प्रोसीजर है, ये जो मेथड है, इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं. इसका मतलब है कि कोई भी इक्वेशन हो जो कि लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसके लिए ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं. सो देयर विल बी नो चेंज इन द मेथड. ओके, लेट्स continue this discussion in the next session.